Shinzo Abe, the First Lady of Japan, Akia Abe as well, on the same vehicle, alighted on an open vehicle, coming out of the Sardar Vallabhbhai International Airport. They shall be traveling in a road show along the stretch of the coming out of the airport, going on to the riverfront and culminating at the Sabarmati Ashram. The First Lady of Japan taking pictures with her phone, clearly impressed. It must be an experience for her to do a roadshow in a foreign land. We can see the Prime Minister's cavalcade, his security personnel, the cavalcade moving slowly, coming out of the airport, along the stretch, lined up. You can see there are people with professional performers with traditional musical instruments. I have with me Arun Sharma, my colleague. Arun, clearly what a sight. Have you seen? I've never seen such a sight where a foreign dignitary along with his wife, I wasn't expecting the First Lady of Japan to be alighted on the same vehicle with the two Prime Ministers doing the roadshow, participating in the roadshow. बिल्कुल और जो अहमदाबाद वासी हैं साफ तौर पर कह रहे हैं केम छो शिंजो आबे और कोनिचिवा शिंजो आबे, यानी कि जाहिर सी बात है एक भव्य स्वागत जिसकी उम्मीद थी वही होता हुआ। अब पौराणिक कथाओं में और पहले माना जाता था अमृत कि जो शंखनाद होता है
गोंग होते हैं, ढोल नगाड़े होते हैं, ये शुभ संकेत माने जाता है। इसी से अतिथि का स्वागत किया जाता है। और भारत की तो परंपरा है अमृत कि अतिथि देवो भव, और वही करते हुए और दोनों जो प्रधानमंत्री है शिंजो आबे और प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से जो इस कल्चरल रोड शो में जो लोग आए हैं इनका एक तरह से हाथ हिला करके इनका अभिवादन करते हुए। लेकिन जो दर्शक हमारे अहमदाबाद में अभी जुड़ रहे हैं अमृत, उनको हम जरा रूबरू कराते हैं इस पूरे रूट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कल्चरल रोड शो है शिंजो आबे के साथ में, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से शुरू होते हुए ये साबरमती आश्रम तक जाएगा और लगभग 8 किलोमीटर से ज्यादा का लंबा ये रोड शो है अमृत। You can see on your screens the Prime Minister, the vehicle of the Prime Minister, along with the Japanese Prime Minister and the First Lady of Japan, has now entered the city of Ahmedabad. They've crossed the airport circle. You can see people, the residents of Ahmedabad, lined up across the stretch, waving to the dignitaries, and the Japanese Prime Minister and his wife, dressed in traditional Indian attire, waving back at the people of Gujarat, the residents of Ahmedabad. बिल्कुल, और ये जो झलकियां आप देख रहे थे, ये हुडो डांस एक तरह से होता है गुजरातियों में। ये हुडो नृत्य पहले काफी चलता था और इसी को लेकर के भी स्वागत है। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें अमृत कि जो पूरा स्ट्रेच है 8-8.5 किलोमीटर लंबा, इसमें 2 भाग में विभाजित है। एक भाग के अंदर जो एक लंबा स्ट्रेच है उसमें 28 राज्य जो भारत के हैं इनकी झांकियां होंगी, कल्चरल फेस्टिवल होंगे, लोक नृत्य होंगे, लोक संगीत होंगे। तो अमृत कह सकते हैं कि आज एक तरह से मिनी भारत हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये देखिए फर्स्ट लेडी कितना एक्साइटेड है, इन पलों को पूरी तरह से समेट रही हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर। शायद ये जो यादें हैं वो समेट करके वो यहाँ से लेकर के जरूर जाना चाहेंगे अमृत। और दोनों ही देखिए हाथ हिला करके अभिवादन करते हुए जो तमाम जो जनता जनार्दन यहाँ मौजूद है उनका। Bilkul, absolutely. She's wearing an Indian suit, an Indian dress, wearing a dupatta along with, you can see, cultural performances. These are, I would assume, little children, young children, doing cultural performances. Of course, they would be very excited to put out their culture. These small stages from 28 different states and union territories of India. You can see right now they're entering the cantonment area of Ahmedabad starts from here. The people lined up along the roadsides carrying flags of India, miniature flags of India and Japan. And the Prime Minister of Japan, Prime Minister Modi, the First Lady, waving to them. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानीज प्रधानमंत्री शिंजो आबे अब जो एयरपोर्ट सर्कल है उसे पार कर गए हैं और वहीं पे एक तरह से ये देखिए हाथ हिला करके सबका सत्कार करते हुए। अमृत, जो गुजरात में एक तरह से कवि नर्मद काफी मशहूर जो कवि थे, वो उन्होंने 2 लाइनें कही थी। वो कहते थे, उनकी कविता जो काफी मशहूर है यहाँ पे एक तरह से एंथम की तरह से मानी जाती है, वो कहते थे कि जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात, दीपे अरुणु प्रभात, जय जय गरवी गुजरात। तो गुजरात की जो गौरव गाथा है वो साफ तौर पर इस जो रोड शो है, जो कल्चरल रोड शो जिसे हम बता रहे हैं, उसमें साफ झलकती हुई नजर आ रही है। शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा अमृत के 2 जो देशों के प्रधानमंत्री हैं या मिनी इंडिया का एक तरह से इनको नजारे देखने को मिल रहे हैं। पूरा भारत मानो यहां पर समेट करके इस अहमदाबाद के 8 किलोमीटर के स्ट्रेच में आ गया हो। Absolutely. Look at the First Lady of Japan. There's a childlike excitement, Arun, on her face. She's carrying a phone with her. She's, making videos of this. I'm sure this is a very unusual experience for her. Of course, she's pretty excited. These dancers putting out dance forms of their states. These small stages have been set along the route. So, setting the stage for the hard task of diplomacy, which is actually going to start tomorrow. But the Prime Minister Modi, has given a fillip to it by starting it off with cultural diplomacy. And the Japanese Prime Minister and the First Lady, they were, dressed in business attire when they alighted from the plane, went down to
put on Indian clothes, change at the airport itself, and you can see dance troops, security personnel, the common man. These women, I'm sure, would be housewives from Ahmedabad, lined up, waiting for Prime Minister Modi, Prime Minister Abe, and the First Lady. अमृता, अपने दर्शकों को अब ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे इस वक्त जो कैंटोनमेंट एरिया है यहाँ अहमदाबाद में, जो अहमदाबाद वासी हैं वो बिल्कुल समझते होंगे, इस एरिया के बाहर की तरफ से गुजर रहे हैं और साबरमती रिवर फ्रंट सबकी जो निगाहें हैं उस पर रहेंगी कि जब उनका काफिला वहां से निकलेगा। ये देखिए, जो कैंटोनमेंट एरिया का जो ये बाहर का पोर्शन है वहां से ये काफिला गुजरता हुआ, और जाहिर सी बात है जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये उत्तराखंड का जो नृत्य हमने देखा, और जाहिर सी बात है ये काफिला गुजरता हुआ, और ये तमाम जो लोग हैं ये रेसिडेंशियल एरिया भी है, तो समझ सकते हैं कि कैंटोनमेंट एरिया के पास में जो ये रेसिडेंशियल एरिया है तो ये उसकी भीड़ है। पूरे स्ट्रेच में हम मान के चल सकते हैं अमृत के लगभग 1 लाख के आसपास तक लोग यहाँ मौजूद हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है काफी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। Absolutely. Arun, you're a Gujarati. You've grown up in the city of Ahmedabad. You've done your schooling here. You've done your college here. Up till about 21, 22 years of your life, you were living here. Have you ever seen a sight like this in your city? ये जो दृश्य है अमृत, मैं बयान नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ तीसरा रोड शो है गुजरात के अंदर, लेकिन सबसे खास बात यह है कि हर रोड शो अपने आप में काफी अलग था। आप सूरत की बात कर लीजिए, आई एम न्यू इंडिया की पूरी थीम के ऊपर रोड शो को डिजाइन किया गया था, अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई थी। और अब जब यहाँ जो ये रोड शो हो रहा है, जाहिर सी बात है दुनिया के जब दो दिग्गज नेता मिल रहे हैं, ये दोस्ती अपने आप में बयां कर रहे हैं। अगर आप इस बॉडी लैंग्वेज को रीड करने की कोशिश करें अमृत, ये बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ बयां करती है। ये जो दो रिश्ते हैं भारत और जापान के, यहाँ से नई ऊंचाइयों तक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये देखिए, जापानीज जो छतरियां हैं, जो गुजराती गुड़ियां हैं जापानी कलेवर के अंदर, तो ये जापानीज डॉल एक तरह से आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। Absolutely. Arun, let me tell you, these young girls, I met them in the morning. These are school students, students of class 8th and 9th. They are dressed up in kimonos, the traditional dress of Japan, which women there wear. They're carrying the Japanese umbrella, and they're also carrying Japanese, fans in their hands. Right now, I can see the Indian flags in their hands and the Japanese, fan in their hand. They're trying to put out a Japanese dance to put out the Indo-Japan bonhomie. So when the First Lady of Japan and the Prime Minister of Japan, Prime Minister Abe, when they pass through, they would be delighted to see that Gujarat, a state which they've never visited before, has a very significant Japanese cultural presence, because there is already a Japanese industrial park here. Another park at Sanand is being negotiated for about an investment of about 25,000 crore rupees. We could see that materialize, agreements on that materialize during the 12th India-Japan Annual Summit. A lot of investment come in, and I think that is the reason behind why Prime Minister chooses, to take foreign dignitaries out of Delhi. The last time he took Prime Minister Abe to Varanasi, he had brought President Xi here along the riverfront. If you remember, that dinner diplomacy had happened. So clearly, trying to put forward the myriad cultures of India and give a sense of a feel of the diversity that India really is. It's surely going to be a dose of microcosm of India. 28 cultures represented by their dances, performances, and coming from the small country compared to India in geographical size. They the First Lady and the Japanese Prime Minister would be left impressed. You can clearly see that on their faces. देखिए, दोस्ती देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की, जाहिर सी बात है हर दोस्त को अपना दोस्ताना याद रहता है। ये वो पल है जो जिंदगी भर शायद याद रहता है, और ये जो यादें हैं, ये जो पल हैं, ये समेट करके जरूर लेकर के जाएंगे। अभी अपने दर्शकों को बता दें अमृत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शिंजो आबे का जो काफिला है
यहाँ हनुमान मंदिर है जो कैंटोनमेंट एरिया के पास पड़ता है। अमूमन शनिवार को जब भी आप यहाँ आएंगे तो काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। उसी तरह की भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से नवरात्रि के ठीक 7 दिन पहले ये पूरा अहमदाबाद शहर जो है दुल्हन की तरह से सज गया है, ऐसा लग रहा है कि शायद नवरात्रि पहले ही यहाँ पे आ गई है 7 दिन पहले। और जिस तरह के ये जो गरबे आप देख रहे हैं, ये देखिए भांगड़ा जो एक तरह से अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, पंजाब का कल्चर अमृत भांगड़ा यहाँ पे होता हुआ। तो 28 राज्य की जो हम बात कर रहे थे, तो हर जगह पे ये स्टेज को बनाया गया है ताकि लोग जो यहाँ पे जो रेसिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल एरिया है, वहाँ से लोग आए यहाँ पे नृत्य को एक तरह से महसूस करें जो पूरे भारतवर्ष का है। और जाहिर सी बात है इस शाम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाए, क्योंकि ये जो पल आप देख रहे हैं शायद ये फिर कभी ना आए। लेकिन हाँ, ये नई शुरुआत ज़रूर हो गई है जहाँ तक भारत और जापान के रिश्तों की बात की जाए तो। Absolutely. I've seen political leaders, especially during election rallies or otherwise holding road shows in their country, travel in open vehicles, trying to reach out to public. But this is the first time I've been covering foreign affairs for some time now. I've never seen a foreign leader come to India, travel in an open vehicle on the streets of a city. Generally, diplomacy used to be conducted from the Hyderabad House of New Delhi behind